Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and welcome back to the studios. We are in this segment going to talk about the preparations involved for Jalsa Salana and a bit of a history also. I am joined with me with three prominent guests. We have Malik Akram Saab, Aziz Hafiz Saab and Nasir Deen Sahab, who are all from various departments within the Jalsa Salana. Malik Akram Saab is the Jalsa Gah, he is Naib Afsar, Salana Jalsa Gah. Aziz Hafiz Sahib is from the Khind Khal department, and Nasir Deen Sahib is from the Jalsa Salana department. We shall be talking with them and discussing about their various roles and how Jalsa has really progressed over the years. So Nasir Deen Sahib, Jazakallah for joining us first of all. It's the 49th Jalsa Salana by the grace of God Almighty, and we've seen many Jalsa Salanas come in the UK. So how have we seen the progression of Jalsa Salana? How have you seen it in particular? Jalsa Salana UK began in 1964, and the first Jalsa was held in the Masjid Fazl grounds. Right. The grounds of Masjid Fazl, apart from the masjid itself, there were two large houses. And so the gardens of those houses were quite vast. And in 1964, the Imam at that time, Bashir Ahmad Rafiq Saab, he decided that we should initiate in Jalsa Salana here in the UK as well. And it was in the same pattern as the original Jalsa Salana that was initiated by Hazrat Masih Islam in Qadian in 1892. So just as a reflection from Qadian, we set up here in the UK. And the objectives were that, as Hazrat Masih had two objectives. One was for the spiritual enhancement and the benefit of the members of the Jamaat that would come and benefit spiritually from in their spiritual knowledge and experience. And secondly, that the members of the Jamaat would meet each other in a mutual brotherly love. And the UK Jamaat was established in 1913 here in the UK. And by 1964, we had many branches throughout the UK in Scotland and other parts of the United Kingdom as well as London. And the Jamaat needed to have to start these jalsas at that time. Of course. So Aziz Hafiz Saab, your Khind Khal department. Khind Khal, many people at home also may not know what it means and what your department actually does here at the Jalsa Salana. I know your department is very busy as well, of course, like Nasir Deen Saab's department. So what is Khind Khal all about? What is incorporated within Khind Khal? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Khidmat Khalq department essentially is trying best to serve the guests of the Promised Messiah, as nearly all departments do, but in many logistical capacities in terms of using our volunteers to man strategic points, security points, car parking, ushering of guests, ensuring essentially the safe passage and flow and movement of our guests, not only through the Jalsa Salana site, but through the other sites that are associated with Jalsa, in terms of Baitul Futuh, Masjid Fazl, Islamabad, as well as the Jamia sites. So it's just not here in Hadiqat al-Mahdi, it's in all the sites which we have here? All the sites, and obviously under the guidance of our officer Khidmat Khalq, Mirza Waqar 7 Saab, we have 36 nizamats that range from a whole host of these activities that we mentioned earlier. Right, mashallah. And with all these different departments, you have one person manning each department. Is it how big is each department? Is it just miniature departments, or is the work quite vast? The work is quite vast. They range, for example, the car park area. So we essentially running two car parks. The car park here at Hadiqat al-Mahdi, you will have a Nazim that runs the car park. Rafiq Saleh Saab here from Birmingham. Under him you have a team of Khudam that will manage particular zones within that car park. Then we have our Nazim of the car park in Country Market, who will manage the Country Market car park with a shuttle service that brings people across to Hadiqat al-Mahdi. So the Country Market is essentially a plot of land which is close to Hadiqat al-Mahdi? The Country Market is basically a 5-10 minute drive. It is a large open sort of farm shop where we hire the land to use as an extra car park to take the pressure off Hadiqat al-Mahdi. Mashallah. मलिक साहब, जैसा कि नसीर दीन साहब ने पहले फरमाया था कि जलसा सालाना यूके का जो पहला जलसा सालाना था वो एक छोटे पैमाने पे शुरू हुआ था, बहुत ही कम तादाद थी, बहुत ही छोटा जलसा सालाना था। माशाल्लाह खुदा ताला के फज़ल व करम से आज हम देखते हैं
کہ مختلف ممالک سے لوگ ہمارے جلسہ سالانہ میں UK کے جلسہ سالانہ میں شرکت کرتے ہیں. ہم نے سنا عزیز حفیظ صاحب سے کہ خدمت خلق کا شعبہ جو ہے وہ صرف ایک جگہ پر لمیٹڈ نہیں ہے, مطلب حدیقۃ المہدی یا بیت الفتوح. اس زمن میں آپ کے چونکہ آپ نائب افسر جلسہ گاہ ہیں, تو ہمارے ناظرین کو یہ آپ بتاتی چلے گا کہ جلسہ سالانہ اور جلسہ گاہ میں کیا فرق ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاکم اللہ رضا صاحب. جلسہ سالانہ اور جلسہ گاہ دو انتظامی لحاظ سے حصے ہیں جلسہ سالانہ کے, اور تیسرا خدمت خلق ہے, جیسا کہ آپ نے 3 نائب افسران کو بلایا ہے. جلسہ سالانہ سارے انتظامات کی نگرانی کرتا ہے سوائے جلسہ گاہ کے انتظامات کے. اور جلسہ گاہ کے انتظامات کے اگر میں آپ کو ڈپارٹمنٹس بتاؤں تو وہ 49 بنتے ہیں, اور جو 50 ہے وہ خود افسر صاحب جلسہ سالانہ ہے. ہر ڈپارٹمنٹ کا ایک ناظم ہے, اور خاص طور پہ جلسہ گاہ کے اندر جو بھی ایکٹیویٹی ہے, جو بھی انتظامات ہیں, وہ جلسہ گاہ کے ماتحت آتے ہیں. سر یہ جو 49 جو آپ نے ذکر کیا, یہ مطلب کہ مین پنڈال کے اندر اس کے وہ 49 جن کا تعلق مین پنڈال کے اندر ہے. ہاں جی, بیسک مثلا اندر سیٹنگ پلاننگ ہے. کسی نے حلقہ خاص میں بیٹھنا ہے, جس کو پاکستان میں حلقہ خاص کہتے تھے, یہاں گرین ایریا کہتے ہیں, جو سٹیج کے بالکل سامنے ہوتا ہے. پھر سٹیج کے ایک سائڈ پہ کرسیاں لگی ہیں, جس میں جو غیر برٹش لوگ ہیں, جو باہر سے مہمان آتے ہیں, عرب ہیں, افریقہ سے تعلق رکھنے والے ہیں, فرینچ ممالک سے ہیں, یورپین ممالک سے ہیں, وہ انگلش نہیں سمجھ سکتے, تو ان کے لیے الگ چیئرز رکھی گئی ہیں. پھر ایسے احباب ہیں جو مہمان کے طور پر آتے ہیں, جو احمدی نہیں ہیں یا احمدی بھی ہیں, اور خصوصی طور پر وکالت تبشیر ان کو انوائٹ کرتی ہے. وہ خاص مہمان ہیں, ان کے لیے الگ کرسیاں رکھی گئی ہیں. اس کے پیچھے پھر ایسے احباب جنہوں نے ریسنٹلی اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ میں شمولیت اختیار کی ہے, ان کی کرسیاں. پھر ایسے احباب بھی ہیں جو معذور ہیں, زیادہ دیر زمین پہ نہیں بیٹھ سکتے, یا کوئی بھی ان کی معذوری ہے, تو ان کے لیے بھی کرسیاں ہیں, اور ان کی تعداد 2000 سے زائد ہوتی ہے. مطلب وہ یہ لوگ اگر مثلا مہمان آتے ہیں یا ہم دیکھتے ہیں تو بظاہر تو صرف ایک پنڈال ہی لگتا ہے جس کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا مختلف اس کے حصے ہیں, جو کہ ہر ایک حصے کو ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ ہمارا پنڈال جو مین مارکی ہوتی ہے اس میں اچھی ساری سیکشنز کی ہوتی ہیں تاکہ لوگوں کو کوئی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے, تاکہ آرام سے جو مہمان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مختلف ممالک سے مختلف زبانیں بولنے والے آتے ہیں, ان کو کوئی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. جزاکم اللہ. Totally does, like Malik Akram Saab just explained. Aziz Hafiz Saab, you explained how, versatile and how many detailed departments there are within the Khalq department. Malik Akram Sahib has just explained that within the Jalsa Guard department, which is completely separate, there are whopping 49 separate departments, and that's just within the main marquee. And all these departments operates within, their own terms, and there's the details they have to look for. For example, there's the chairs, the translation area, the people where the guests of the Prophet Messiah will sit, and of course the audio systems, and many things which need to be kept in mind. So after this, in the Nasruddin Sahib, we've been seeing a Jalsa, for 49 years, and every year, of course, by the grace and mercy of God Almighty, there's improvement upon improvement. So what kind of improvements in more recent years have we been witnessing here in Hadiqat al-Mahdi or Jalsa Salana, United Kingdom? We've been blessed with the international Jalsa being held now in the UK, and that's really when our Jalsa Salana UK really developed, by the institution of Khilafat, of being here, and Hazur Aqdas presiding for the Jalsa. So the whole horizon and the whole outlook has changed totally. Okay. It's not just a UK Jalsa, it's an international Jalsa. And the biggest blessing of Khilafat being here that I have seen is how the Jamaat in the past
was relying on outside expertise, non-Ahmadi expertise, members we were hiring and experts. So essentially what you're saying is initially there were people, Yes. experts coming out of the Yes, Jamaat yes. and within the Jamaat. Yes, Okay. yes. I mean, just to give you an example, you mentioned Hadiq al-Mahdi. Hadiq Yeah. al-Mahdi, for most of the year, is just plain fields, it's Right, a of farm. course. And to develop and turn a farm into a mini city, Mini city, how they for call it. more than 3 days, it's about 5 days that we use the site from the inauguration. It requires experts in every field. You need engineers, you need water engineers, specialists, electricity engineers, sound engineers. You need architects. You need health and safety specialists, and many other areas. And every one of those people that are found within our Jamaat, and they come as volunteers. I mean, the electricity infrastructure is, you could run a city from how many generators we have here. Right. And that is planned by our own electricians. The water systems that we have in Hadiq al-Mahdi, the water pressure, the infrastructure, we have specialists in water. You have IEEE's engineers that come, and the rate of water supply that needs to go through the pipework. Astonishing. So essentially now, by the grace of Allah, we have these specialists, Yes, professionals from the Jamaat from within the Jamaat. working. And you mentioned engineers. I mean, for our viewers at home, that may be a bit of a shock horror, but engineers here at Jalsa Salana. Yes, I mean, we have, for many months before Jalsa, the planning is required. You have 40,000 people who need to do wuzu. Right, of course. Yes, so you need to have the right quantity of water. It's got to be pumped at the right speed, and it's got to be there at all the time. In addition to that, for the langars, we have gas specialists that have to make sure this gas supply is at the right rate, that we can cook food here. Right. और रसीद साहब ये सब बातें हजूर अनवर अय्यद ताला नस्र अज़ीज़ की डायरेक्ट सुपरविजन के अंदर होती हैं हजूर की जो हदायत आपको मौसूल होती हैं उन्हीं के मुताबिक फिर जी अफसर जल्सा सलाना जी अफसर जल्सा सलाना हजरत 10 मुलाकात होती हैं पूरे साल में, और हजूर की शफ़क़त है कि हर बात में हमें गाइड करते हैं. हमने अभी inspection पे भी अभी देखा है. Of course, right. We were watching the inspection video, which was on MTA as well. Hazur was looking at every single department and with detail and questioning as well. And with the inspection and with Hazur's speech as well, Aziz Afisab, Hazur said that by the grace of Allah, it's hard to find a fault now, by the grace of Allah. And we're going upon improvement. We were talking about Nasir Deen Saab just mentioned, Aziz Hafiz Saab, that there's been professionals within the Jalsa site set up. So what about with your department? Do you require specialists, or how does that work? Yes, even in the Khalq, there are specialists that are required in varying areas to advise. Right. Although the manpower is essentially volunteers, and you have people that from one profession in their personal lives doing completely a different work. This year, one of the changes you've seen, we've used a lot of our MD police officers. And we've used their expertise in terms of managing command and control centres within Jalsa Salana itself. So within Khimta Khalq, there's also security within that. So you've used Ahmadi police officers. Yes, and using their expertise in terms of, although we have our own command and control structure, but polishing that to ensure lines of communications flow between varying departments in, God forbid, in an emergency, the channels of communication. Main, important thing that you have communication within the departments and with other departments as well. Absolutely. You're the with main so many departments across the board, each working flat out, there has to be some way of ensuring that communication, particularly in terms of traffic flow, public flow, pedestrian flow, flow during an emergency situation is managed very, very well to ensure that the guests are secure, public is secure, and the site can be evacuated safely as well. Right. I mean, over the years since we've been in Hadiq al-Mahdi, I mean, just as Aziz mentioned, the country market car park. It's a hard standing car park. We have a very good shuttle system from the Jalsa Salana organizes with coordination with Khidmat Khalq, that as members of Jamaat arrive, and it's the preferred car park, where as they arrive there, they are shuttled straight away directly to the main entrance of Jalsa Salana itself. In addition, which many viewers may not be aware of, that we have special train arrangements that come from London. Not only do we have coaches coming, but with the Southwest trains,
we have a special timetable that we each year we negotiate with them so that the peak times are covered. For example, members should arrive at Jummah here, and the number of extra coaches per train. So with this, you did mention the trains coming down and a special line just for us. How's the cooperation within the councils and within other organisational bodies? Have we had a good connection with them? I guess year by year this connection has been developing further and further. By the grace of Allah, it's very good, and it's over the years we have regular meetings throughout the year. Khidmat Khalq, Jalsa Salana, health and safety, with not only the councils but with the fire services, the emergency services, and that is not just one meeting but a number of meetings, and then we have regular inspections from the council, and by the grace of Allah we have passed all of their requirements and we try and improve them. माशाल्लाह। अकरम साहब, हमने अभी नायब अफसर जलसा सालाना से सुना कि इमसाल जो नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई हैं, जो बेहतरी लाने की कोशिश की गई है, यकीनन हमारा हर साल यही गोल होता है, यही कोशिश होती है हमारी हर साल के पिछले साल से बेहतरी लाई जाए। हजूर अनवर तलब नस्ल अज़ीज़ की के इरशादात और हजूर की हदायत पर अमल करते हुए इमसाल जलसा गाह में आप हमें क्या बता सकते हैं कि कौन सी बेहतरी लाने की कोशिश की गई? इसकी तरफ आने से पहले मैं एक अर्ज़ करूं, पहले सवाल जो फातिर साहब ने किया था अफसर साहब, नायब अफसर साहब जलसा सलाना से, कि हजूर की रहनुमाई, हजूर ने इफ्तिताह के मौके पर, इंतज़ामात के मुआयना के मौके पर फरमाया कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल से जमात इतनी एक्सपर्ट हो गई है कि ढूंढना पड़ता है कि कोई नक्स ऐसा हो ताकि उनकी रहनुमाई की जा सके। यह हजूर की शफ़क़त है। यकीनन हम कमज़ोर हैं, कमज़ोरियाँ हैं, कमज़ोरियाँ इंसान से सरज़द होती हैं, और हजूर चश्म पोशी फरमाते हैं और साथ रहनुमाई फरमाते हैं। आप को मैंने अभी बयान किया है, एक डिपार्टमेंट के एक हिस्सा मैंने बताया था, बाकी डिपार्टमेंट्स बेशुमार हैं, जैसे मैंने बताया 50 के करीब, और जलसा सालाना के 106 डिपार्टमेंट्स हैं, और खिदमत खल्क़ का मुझे याद नहीं है, मेरा ख्याल है कि 36 डिपार्टमेंट्स हैं। तो उनमें हमेशा बेहतरी लाने के लिए हजूर हदायत फरमाते रहते हैं। एक एक चीज़ की हजूर निगरानी फरमाते हैं, रहनुमाई फरमाते हैं। हम जलसे में बैठे होते हैं, जलसा सुन लेते हैं, कह देते हैं ये स्पीचेस बड़ी अच्छी थी, मौजू बड़ा अच्छा था, एंजॉय करते हैं, बड़ा मज़ा आता है, लेकिन इसके पीछे हकीकत है कि अलिफ से लेके ये तक सैयदना हज़रत अमीरुल मोमिनीन अज़ीज़ की रहनुमाई होती है। एक एक कदम पे हजूर हमारी रहनुमाई फरमाते हैं। अब जो तरक्की का मामला है, हर साल अल्लाह ताला के फज़ल से बेहतरी की तरफ जा रही है। जलसा गाह के अंदर इस दफ़ा दोनों मार्कीज़ में, लेडीज़ की और जेंट्स में, कंसिडरेबल उसको एक्सटेंड किया गया है, इजाफ़ा कर दिया गया है उस मार्की में, लेडीज़ में भी और जेंट्स में भी। दूसरा ये है कि हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे अहबाब हैं जो माजूर हैं या किसी वजह से ज़मीन पे नहीं बैठ सकते, तो उनको कुर्सियाँ मुहैया की जाती हैं। उनकी तादाद भी बढ़ाई गई है इस दफ़ा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो आराम से रह सकें। फिर एक ये है कि ये आम तौर पर हमारा, अगर कैमरा दिखा सके, जलसा का प्रोग्राम होता है, इसमें हज़रत अमीरुल मोमिनीन अय्यदुल्लाह ताला अज़ीज़ की हदायत भी शामिल की जाती हैं। लोग इसको घरों में रखते हैं, इससे इस्तिफ़ादा करते हैं। मैं चूँकि इस डिपार्टमेंट का मेरे स्पुर्द है ये डिपार्टमेंट, मुझे पता है कि लोग सोवेनियर के तौर पे घरों में लेके जाते हैं और अगले साल जलसे पे आने के लिए इसकी तैयारी करके आते हैं कि क्या क्या हमारे आका ने हमें हदायत दी हैं। तो ये साइज़ था, लेकिन बाज़ औक़ात ये महसूस होता है कि ये ज़रा बड़ा साइज़ है, तो उसके लिए इस साल जो इम्प्रूवमेंट हुई है, एक पॉकेट साइज़ सिर्फ प्रोग्राम, इसमें हदायत नहीं है, तो ये पॉकेट साइज़ प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया गया है। ये इस तरह खुल जाता है लेकिन पॉकेट में आ जाता है।
और आखिरी मेहमानों को एक और सुवेनियर लेके जाने का मौका जी मिल रहा है मौका मिल माशाल्लाह। जाएगा। और ख़ास तौर पे इसमें में जो हमारे अंग्रेज़ी हाज़रीन हैं उनको भी मैं ज़रा बता दूँ प्रोग्राम के बारे में। एक सिर्फ बात मैं हाँ अर्ज़ जी, कर जी, दूँ, ज़रूर। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस जलसा सालाना का थीम जो मुकर्रर हुआ है वो खिलाफत है। बिल्कुल। और ये पूरे जलसे की थीम है। ये पहले इस तरह नहीं होता था, एक आध सब्जेक्ट हो जाता था, लेकिन पूरे जलसे की थीम जो है वो खिलाफत है। Viewers at home, is Akram Sahib, who is Naib Afsar Jalsa Guys, very beautifully pointed out that everything which happens around Jalsa is under the supervision of Amirul Mu'min Aidullah bin Aziz. May God Almighty be his helper. He takes very close attention on every single department and also guides and advises on issues or improvements also. There's, for example, one improvement which Akram Sahib just mentioned is the actual program itself, which people take home just as a souvenir. And this year it's been in a small pocket-sized form with more additions to it. So these are small but progressive improvements which are happening year on year, and of course under the guidance of Hazrat Amir al-Mu'mineen Ayyadullah bin Aziz. Regarding Hazur, may God Almighty be his helper, Aziz Sahib, Hazur did mention that by the grace of Allah, it is difficult to find a flaw. Did this relax you and your department, the Khidmat Khalq, or was it still full steam ahead? No, it didn't relax us. In fact, it actually makes you a little bit more frightened and cautious, because it's only literally by the grace of God Almighty that we are able to function. It's God-granted capacity. It's very easy to be complacent, to think that it's my abilities to park the car, it's my ability to treat this patient, it's my ability to marshal this queue, and that can deal a sense of arrogance. And it's that whole essence of what the promised Messiah came to teach us in terms of dampening our ego and prostrating to the Lord, and that ensues throughout all our workers, not only in the Khalq, across Jalsa Salana. That yes, by the grace of God, so much is achieved, but why is it achieved? It's achieved only but by the grace of God. If as individuals we try to organize a gathering like this, we could have all the expertise in the world and nothing would happen. Of course. And one of the other key things, again, Hazur alluded to in the inauguration, or the Khutbah Jummah, sorry, the last Friday sermon, about the essence of hospitality. The Prophet Messiah, his hospitality was world famous, and how we impart that hospitality. And I think he said that hospitality is not just the people serving the food, it's not just the people, it's how you are parking the cars, the way that your demeanor towards people. There are long queues, people can get frustrated. Are you going to get frustrated, or are you always going to have a smile on your face? I mean, of course, like you've mentioned, it's almost like a boiling pot sometimes, for example, with the car parking, and Hazur's just reminded everyone again and again that these are the guests of the Prophet Messiah, so they need to be treated as the guests of the Prophet Messiah, of course. अजीज साहब, आपने खिदमत खलक की बात की, तो ये खिदमत खलक की जो रूह है और जो स्पिरिट है, वो हमें आपकी ओपिनियन से दूसरे शोबाजात में भी यकीनन नज़र आता होगा. Would certainly see that spirit in other departments. So स्पिरिट तो हाँ नज़र आता है हर जगह. तो लेकिन उस स्पिरिट का एक पीछे एक बेसिस है, उस स्पिरिट के पीछे एक गाइडेंस है. वो गाइडेंस है कि जो तरबियत हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने हमारी जमात को और ख़ुसूसी तौर पे नौजवानों को मस्जिद ख़ुदामुल अंबिया में दी हुई है, कि जो सर्विस आप क्यों कर रहे हैं, आप सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की खातिर ये कर रहे हैं. जब वो बात भूल जाएं तो आपके काम में ज़रूर आप कुछ दिक्कत, कुछ ना कुछ मुश्किल पेश आ जाती है. Because then you move away from your innate human capacity and you focus on that rather than the fact that it is the divine grace and mercy that's allowing your expertise or your abilities to function in that particular way. सैयदना हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद पे बहुत ज़ोर दिया है, और हकूकुल इबाद में खिदमत खल्क़ आती है, उनका ख्याल करना, उनका आराम का करना. मैं एक ईमान अफरोज़ वाक़या आपको बताना चाहता हूँ. 1961 में
ये मेरी ज़िंदगी का पहला जलसा सालाना था जो मैंने रबवा में अटेंड किया, और छोटे छोटे बच्चे खिदमत खल्क की ड्यूटी दे रहे थे। आप यकीन जानें कि मैं इतना इम्प्रेस्ड हुआ कि एक सड़क के किनारे पे छोटा सा बच्चा है और बड़े बुज़ुर्ग आदमी को या किसी शान व शौकत वाले आदमी को जो बज़ाहिर लगता है सूट पहना हुआ सब कुछ, तो वो बच्चा कहता है अंकल आप रोड की दूसरी तरफ चलें। उसी वक्त मैंने देखा कि वो उधर चले जाते हैं, और अगर कोई ख़ातून उस साइड पे सड़क की जा रही है और उसको वो कहते हैं कि आंटी आप उस तरफ चले जाएं, ये नहीं कहते कि तुम छोटे हो बच्चे हो तुम क्यों गाइड कर रहे हो, फौरी तौर पे वो उधर जाते हैं। और ये इताअत का नमूना और ये जिस डिसिप्लिन को मैंने देखा, इसने मुझे इतना इम्प्रेस किया कि मैंने कहा कि मैं अब रबवा से नहीं जाऊंगा जब तक मैं बैत ना कर लूँ। वो जलसा था और ये निज़ाम था जिसने मुझे इम्प्रेस किया और मजबूर किया कि मैं फौरी तौर पर जमात अहमदिया की इस लड़ी में प्रोयाज हूँ। यहाँ भी हम देखते हैं छोटे बच्चे ड्यूटी पे हैं, दिन रात ड्यूटी पे हैं। एक अल्लाह ताला अजीब उनको पावर दे देता है, ताकत देता है। अभी आपके एमटीए में वहाँ पे स्टूडियो में मैंने देखा है थकावट के आसार कुछ नौजवानों में, कभी सर टेबल पे रखते हैं लेकिन अलर्ट हैं, एक लम्हे के लिए रखा और उसके बाद अलर्ट हैं, इसलिए ताकि वो सही तौर पे खिदमत खल्क कर सकें। यहाँ बच्चे जो पार्किंग पे लगे हुए हैं, देख लें कि मर्सिडीज़ आ रही है, जैगुआर आ रही है, वो कहते नहीं इधर जाना है, बग़ैर किसी हील हुज्जत के। ये इताअत का मुकाम जमात अहमदिया के अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगा। बग़ैर हील हुज्जत के वो अपनी गाड़ी को उधर टर्न कर लेता है और जहाँ कहा जाता है। आज भी जो मेहमान जलसा सालाना पर तशरीफ़ लाते हैं जो कि जमात के अहबाब नहीं हैं, जो गैर अहमदी हैं, उनमें भी यही अक्सर कमेंट सुनने को आते हैं कि हमने जो इताअत का मादा देखा है, मतलब छोटा सा बच्चा अगर अपने बड़े को कुछ कह रहा है कि ये नहीं, जैसे कि आपने भी फरमाया, तो चुपचाप करके वो बड़ा जो है वो उस छोटे की मान लेता है। इताअत का मादा जो कि कूट कर जमात अहमदी में भरा हुआ है, हुज़ूर अनवर अज़ीज़ के ख़ताबात, हुज़ूर के इरशादात और हुज़ूर की यहाँ पर फ़िज़िकल मौजूदगी से इतना वो असर पड़ता है लोगों के ऊपर कि वो यही इंप्रेशन लेके जाते हैं कि इस तरह का इताअत का मादा हमने आज तक किसी और जमात में नहीं देखा। जमात अहमदी अल्लाह के फजल से फ्राम डे वन तरबियत हुई है कि जिस तरह नमाज में हम इताअत करते हैं इमाम की, इसी तरह हमने हर मामले में अपने लीडर की, अपने अफसर की, अपनी अथॉरिटी की इताअत करनी है और कर रहे हैं। Akram Saab just beautifully explained how, from the younger generation all the way to the older generation, there's an essence of obedience and a passion, to volunteer for Jalsa Salana. Yes. So with the Jalsa Salana department, what kind of age range do we see within your department? Are there children also working, volunteering, and elderly people? Yes, the age ranges from very young, 6-year-olds, probably 7-year-olds onwards. 6, 7-year-olds. Yes, who work Mashallah. with the Ziyafat departments, Of course. and they serve some water. I think this is how many of us started. I think we all started that way. आज ही सुबह एक दोस्त आए और उनका बच्चा रो रहा था, हार्डली मेरे ख्याल ही वाज 7, तो मुझे कहने लगे कि आप इससे पूछें क्यों रो रहे हैं। मैंने उससे प्यार किया, मैंने पूछा बेटे आप क्यों रो रहे हैं जी। कहते मैंने ड्यूटी देनी है और अब्बू मुझे वहाँ ले जा नहीं रहे जहाँ मेरी ड्यूटी लगती है। अब ये जज्बा है कहाँ से पैदा हुआ है? ये अल्लाह ताला के फजल से जमात अहमदिया के बच्चों में भी, बड़ों में भी, जवानों में, सब में मौजूद है और यही खिदमत खल्क है। In Battle for Two, for example, we have, that is one of our centres where we receive guests, and at prayer time, before the prayer, the Tarbiyat department has some young children who have some Tarbiyati notices to remind members of the etiquettes of prayer, and then they do their prayer, and after prayer, then they go back to the duty. And they're very young children, and it has two trainings. One is, of course, in the Nizam al-Jalsa Salana, but this is a part of a spiritual training. To have, this is a very unique organization, that it's a spiritual organization where effectively from the date of birth, each child is initiated in a training program. Of course. And that training program continues not just during the 3 days of Jalsa, but continually. And so everybody
under the supreme guidance of Hazrat Amir Mu'mineen, has a full love for their duty. And people look forward to these 3 days where they can meet other friends and also have a spiritual experience. And every child and every adult, and we have 90-year-old people also who are, 90 years old. Yes, we have 90-year-old people also who are involved in some way, elders, and they're sitting and they say, we want to do a duty, just leave us there. Wow. And they are either giving these information packs or giving some advice. So And then, even if someone's 90 or if he's six or Yes, 7, yes. basic duties he can carry out, you know, which aren't Yes. too labouring or too taxing, of course. It's not even the age. It doesn't matter if you're a doctor or a lawyer Yes, or yes, just yes, yeah. school teacher or anyone. I think as Aziz Hafiz said, you can probably tell us a lot of stories how many of our khuddam or even ansar who have good professions, a good professional background, who come here and do voluntary duties. You'll have people, doctors, lawyers, barristers, engineers, taxi drivers, students, unemployed, will be doing work that may not necessarily be related to their profession. You may have doctors cleaning washrooms, you may have barristers parking cars, you may have plumbers interviewing ministers and guests. So it is across the board, and that is the beauty of what the teachings of the promised Messiah and the training under Khalifatul Masih has given. It has allowed a community across all boards to excel in areas that may not necessarily be their forte day to day. और फिर आगे जाके मलिक साहब हम देखते हैं कि जलसा गाह में वो तमाम अहबाब कंधा ब कंधा एक सफ़ में खड़े होते हैं और अपने इमाम के पीछे लब्बैक कहते हुए। ये कामयाब डॉक्टर हैं अल्लाह ताला के फजल से, मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते भी हैं, और इनकी हालत थोड़ी देर पहले आप देखते कि किस तरह लेबर वर्क करते हुए आए हैं, और इनके चेहरे पे बशाशत है, और मुझे नहीं पता कि ये रात को सो भी सके हैं कि नहीं। तो एक दफ़ा मुझे याद है कि दारुज़ियाफ़त में, पुराना दारुज़ियाफ़त ईवान महमूद में होता था, कोई गेस्ट आ गया, कोई वीआईपी था, एमपी था या एमईपी क्या था, तो उसको इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा था निज़ाम से, तो बताया कि ये डॉक्टर वली शाह साहब हैं, ये यहाँ खाना पकाते हैं, ये डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब के बेटे हैं जो बर्तन धो रहे हैं, ये फ़लाँ हैं, ये फ़लाँ हैं। वो कहते हैं कि आपके एम्प्लॉयमेंट का क्राइटेरिया क्या है? Jazakallah, bilkul. Jazakallah, shukriya bahut bahut. Viewers at home, you know, it's been a great discussion. Jazakallah for all our guests who have come here. You know, we've come to the conclusion, Raza Sahab, that this Jalsa, you know, simply cannot happen, as Hazur also alluded to, without the blessings and grace of God Almighty, of course. And we have seen this Jalsa progress from strength to strength, from improvement to improvement, to progression. And inshallah, it will do and carry on progressing with the grace of God Almighty, for it is the Jalsa, the convention of the promised Messiah alayhi salatu wasalam. Jazakallah for watching, and we'll just take now a brief break and we'll go to Mohid Saab after the break. Jazakallah, shukriya.